हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ एकलव्य। बात करें जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट 25 ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2026 के लिए। यहाँ आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज पर प्रीवियस पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। चलिए नेक्स्ट। On April 1, 2026, the Government of India officially commenced the field work for the 16th National Census, which unique feature distinguishes this census from all previous ones. Option A, it is the first to include a column for transgender individuals. Option B, it is the first to offer a self-enumeration facility via a mobile app or portal. Option C, it is the first to count the population of overseas citizens of India, OCI. Option D, it is the first to be conducted in a single phase across the country. Option B is the correct answer. It is the first to offer a self-enumeration facility via a mobile app or portal. Next. In February 2026, which country officially handed over the presidency of the G20 to South Africa? Option A, India. Option B, Brazil. Option C, United States. Option D, Saudi Arabia. Option B is the correct answer, Brazil. Next. The Operation Shakti, which established India as a nuclear capable nation, was conducted in Pokhran in which year? Option A, 1974. Option B, 1991. Option C, 1998. Option D, 1999. Option C is the correct answer, 1998. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। While the first test Smiling Buddha was in 1974, Operation Shakti Pokhran 2 consisted of 5 nuclear tests in May 1998 under the leadership of PM Atal Bihari Vajpayee. यहाँ बोल रहा है फर्स्ट टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था, और दूसरा हुआ ऑपरेशन शक्ति पोखरान 2, ठीक है,
कब हुआ ना 1998। पहला हुआ 1974 में, दूसरा हुआ 1998 और दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है। पहला वाला स्माइलिंग बुधा है और दूसरा ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में हुआ ऑपरेशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट। As of the latest state of forest report discussed in March 2026, which state in India has the largest forest cover by area? Option A Odisha, option B Madhya Pradesh, option option C Arunachal Pradesh, option D Chhattisgarh. Option B is the correct answer. Madhya Pradesh has the largest forest cover by area. अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया तो मिजोरम करेक्ट आंसर मिजोरम होगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफी एरिया द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मिजोरम, बट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। The Macules Minute of 1835 is a landmark document in Indian history that primarily advocated for option A the introduction of permanent land settlement, option B the promotion of Western education through the English medium, option C the abolition of the sati system, option D the recruitment of Indians into the higher civil services। यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। चलिए नेक्स्ट। In January 2026, which Indian state's tabulous won the People's Choice Award at the Republic Day Parade for its theme Women Empowerment in Viksit Bharat? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओडिशा। चलिए नेक्स्ट। Which component of the money supply is known as narrow money?
in the banking system? Option A M1, option B M2, option C M3, option D M4. Option A is the correct answer, M1. इसको नारो मनी कहते हैं M1 को, और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द विज्ञान टेक 2026 एग्जीबिशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन मे 2026 emphasized the tech संग्रह. What is it? Option A new digital currency for scientific research. Option B, a compendium of indigenous technologies developed by Indian autonomous institutions. Option C, a satellite constellation for rural internet. Option D is global portal for STEM student exchange. यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए कॉम्पेंडियम ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इंडियन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस. चलिए नेक्स्ट. The Kandmar Haldi turmeric from Orissa received its GI tag primarily due to its option A high curcumin content and organic cultivation. Option B resistance to all known pests. Option C ability to grow without any water. Option D bright red color when dried. यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाई कर्कमीन कंटेंट एंड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन. चलिए नेक्स्ट. Which schedule of the Indian Constitution contains the list of Which schedule of the Indian Constitution contains the list of recognized languages of India? Option A 7th schedule, option B 8th schedule, option C 9th schedule, option D 10th schedule. Option B is the correct answer, 8th schedule. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द 8th schedule currently recognizes 22 languages. Odia was the 6th language to be granted classical language status in 2014. फिलहाल 22 लैंग्वेज इंक्लूड हुआ है, ठीक है. इसमें से ओडिया 6th लैंग्वेज था, कब ना 2014 में मिला स्टेटस, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ओपीएससी के लिए, ओपीएससी एएसओ के लिए. चलिए नेक्स्ट.
Agni 5 missile, which underwent a successful pre-induction night trial in late 2025, has an estimated range of ऑप्शन ए 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। Who was the first chief minister of Odisha after India gained independence in 1947? ऑप्शन ए नवकृष्ण चौधरी, ऑप्शन बी हरे कृष्ण महताब, ऑप्शन सी बिजू पट्टनायक, ऑप्शन डी विश्वनाथ दास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरे कृष्ण महताब। इनको उत्कल केसरी कहा जाता है, उत्कल केसरी। नेक्स्ट। The Global Innovation Index GII 2025 report showed India's ranking improving significantly. Which organization publishes this index? Option A World Bank, option B World Intellectual Property Organization WIPO, option C IMF, option D WEF। यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट। मिशन शक्ति इन ओडिशा, which celebrated a milestone in April 2026, is primarily a program for option A space exploration and satellite launching, option B economic empowerment of women through self-help groups SHGs, option C modernizing the state police force, option D providing free electricity to farmers। मिशन शक्ति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SSG। यहाँ आपको हिंट मिल रहा है, मिशन शक्ति, शक्ति वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए याद रख पाएंगे अच्छे से, ये छोटा सा हिंट है। चलिए नेक्स्ट।
In the context of environment, what is the carbon leakage? A term frequently discussed in early 2026 climate summits. Option A, the accidental release of carbon dioxide from underground storage. Option B, companies moving production to countries with laxer emission rules to avoid carbon taxes. Option C, the failure of electric vehicle batteries. Option D, natural carbon dioxide emissions from volcanic eruptions. यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंपनीज मूविंग प्रोडक्शन टू कंट्रीज with laxer emission rules to avoid carbon taxes. Option B. Next. Which Indian freedom fighter founded the Commonwealth and New India newspaper to propagate the Home Rule movement? Option A. Bal Option A. Bal Gangadhar Tilak. Option B. Ani Besant. Option C. Bipin Chandra Pal. Option D. Lala Lajpat Rai. Option B is the correct answer. Ani Besant founded Ani Besant founded the Commonwealth and New India newspaper to propagate the Home Rule movement. Next. The Vande Bharat Express sleeper version introduced in early 2026 connects which two major cities in its first route? Option A. Delhi and Mumbai. Option B. Bhubaneswar and New Delhi. Option C. Bengaluru and Chennai. Option D. Mohammadabad and Mumbai. Option B is the correct answer. Bhubaneswar and New Delhi. Next. The Tista River dispute, which saw renewed diplomatic talks in April 2026, is a major issue between India and which neighbor? Option A. Nepal. Option B. Bhutan. Option C. Bangladesh. Option D. China. Option C is the correct answer. Bangladesh. Next. Which viceroy is associated with the partition of Bengal in 1905? Option A. Lord Ripon. Option B. Lord Curzon. Option C. Lord Minto. Option D. Lord Hardinge. Option B is the correct answer. Lord Curzon. चलिए नेक्स्ट.
as of April 2026, what is the base year currently used for the calculation of the consumer price index CPI in India? ऑप्शन ए 2004 से 2005, ऑप्शन बी 2011 से 12, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 2017-18, ऑप्शन डी 2022-23। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2011 से 12 आज ऑफ अप्रैल 2026 बोला है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद 2022 से 2022-23 इसका बेस ईयर होगा। ठीक है, अप्रैल तक 2011-12 यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।